में इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, भले ही आपका गूंज इन तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट इनको एटलीस्ट दिखाई दे कि we are there to kind of welcome him. Namaskar, everyone. So It is so good to be with you and to just watch your big smile face and wonderful faces. It made me so happy. तो सर कह रहे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा आज आप लोग के सामने देख के और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हुई. Welcome to our youth forum. I guess we call S7 because we're starting at 7 o'clock, right? So सर कह रहे कि आज 7 at 7 है क्योंकि हम 7 बजे आज शुरू करते हैं. मतलब इस फोरम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. I can see so many of us right now participated in this S7 youth forum, and I'd like to welcome each of you with a warm heart and from the depth of my heart. तो आज इस फोरम में जो 7 बजे का जो फोरम है, मैं आप सभी को दोबारा आपको हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरे दिल से मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं दोबारा. And I am so grateful for this opportunity to be with you, to share my thoughts with you. Thank you to our management in our local India office, also all our leaders here. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आज आपने मुझे यहाँ पे आपके सामने बुलाए और मुझे बोलने का मौका दिया, और हमारे जो लोकल इंडियन मैनेजमेंट है और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद. I'm also recognizing my good old friend, Mr. Todd Smith. I'm grateful for this opportunity to be with them. I can tell this is a very early morning for him from US where he's staying right now. तो मैं मेरे दोस्त हमारे टॉड स्मिथ सर हैं, वो हमारे साथ जहाँ में जो जुड़े हैं वो अभी बहुत सुबह है, तो मैं उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ. So it is a good time. It is a great time to be together, even though online. But I'm so happy to be with you, with all our friends here. तो आज मुझे बहुत खुशी लग रही है कि भले ही ऑनलाइन है, फिजिकली ना हो, लेकिन आज ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग आपको देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके. And thank you, each of you, for your time and your sacrifice to be with us to hear the great stories. That are not only my thoughts, but Mr. Todd Smith and also all our successful leaders in India. तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज हमारे साथ जुड़े. ये खाली मेरे ही एंगल से नहीं है, हमारे टॉड स्मिथ साहब से और बहुत सारे जो चीज आज आप हमारे आसपास जो देख रहे हैं, उसके लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Now, before we started, I must tell you, I must express how disappointed I am and how jealous I am for our India management team, because the fact that you had such an awesome trip to Goa without me. तो ये कह रहे कि सर कह रहे कि मैं बहुत जेलस हूँ कि अभी मैंने जब वीडियो आपका देखा, बिकॉज इन्होंने वो देखे नहीं थे, तो मैंने जब आपको वीडियो देखा मुझे बहुत जेलस हुआ कि जब आप लोग ने आपको मुझे छोड़ के आज मतलब आप लोग ने इतना एंजॉय किए गोवा में. Now, Mr. Stuart Hughes, time to time, he was telling me that how jealous he was because I spend all the time with you and he couldn't, right? Now I can understand his feeling a little bit now. तो स्टीवर्ट ह्यूज साहब उनको भी बहुत जेलस होता है, बिकॉज मैं आपके साथ में बहुत समय इस्तेमाल कर पाता हूँ या स्पेंड कर पाता हूँ, लेकिन वो समय यहाँ पे आपको स्पेंड नहीं करते हैं, तो वो भी आपको जेलस रहते हैं कि मैं भारतीय के साथ ज्यादा समय इस्तेमाल करता हूँ या फिर स्पेंड करता हूँ. But I am so happy to find out, and I'm so excited to find out you all had a great time there. तो मुझे ये सुन के और देख के बहुत अच्छा लगा कि आप सभी का वहाँ पे आपने अच्छा समय व्यतीत किया. Not only that, but also you were all safe from the COVID-19, and you had not only great time there, but also a healthy time there in Goa. खाली एंजॉय नहीं किया, लेकिन आपने पूरी एहतियात आपने बरती, ये तो कोविड के संक्रमण के बारे में अपनी एहतियात आपने बरती और आपने एक हेल्दी रिवॉर्ड ट्रिप एंजॉय की. Yes, our Unicity Indian office, our management team did a great job to make sure everything was safe and you're okay. But I also like to thank each of you. You followed all the procedures and the guidelines, so not only you became
safe, but also you help others to be safe too. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे उन्होंने बताई, ये खाली मैनेजमेंट यूनिसिटी इंडिया मैनेजमेंट ने पूरी तरह से सेफ्टी ध्यान में रखते हुए उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन ये कह रहे कि अपनी तरफ से हमारे जो लीडर्स जो ट्रैवल करके गए क्वालिफायर्स, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं बिकॉज़ उन्होंने जितने गाइडलाइंस फॉलो की, उन्होंने खाली अपने आप को सेफ नहीं रखा, लेकिन मतलब उनके जो बिहेवियर से बाकी लोग भी जो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, वो भी सेफ रहे। And also, as I watching the videos and listening from some of our leaders, one of the things it impressed me much was even though all this turmoils and confusions and all the sad things and bad things due to COVID-19 or pandemic, and I know also I understand that currently India also you're going through another wave of the pandemic. But in despite of all these difficulties and challenges, I see you working so hard and you took that opportunity to be in a road trip in Goa to make sure that you let the people know what is the purpose of the Unicity. तो एक ही चीज़ है, शॉर्ट में इनको बताना चाहता हूँ कि आपको सर कह रहे हैं कि ये जो भी लोग क्वालिफाई करके गए थे, जो क्वालिफायर्स है, वो आपको उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये इस मुश्किल समय में भी जो हम भारत में अभी ये जो सेकंड वेव जो हम अभी जो झेल रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, हम सब जानते हैं, लेकिन इस समय में भी हमारे लीडर्स जो क्वालिफाई आपको हो के जो गोवा जाके आए, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया यूनिवर्सिटी के ऊपर में और वो हमारे साथ गए और पूरी एहतियात बरती और ना ही खाली उन्होंने एन्जॉय किया, लेकिन सब कुछ किया जिसकी बदौलत हमारा ये जो रिवॉर्ड ट्रिप बहुत सक्सेसफुल हुआ। So first of all, I'd like to congratulate to each of you who were participated, who were qualified in spending a great time with not only yourself, but with your maybe spouse, your partners, and also with your families. तो मैं आप लोग जो भी अभी इस गोवा रिवॉर्ड ट्रिप में क्वालिफाई करके गए थे, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खाली वो वही नहीं, अगर उनके साथ अगर परिवार से लोग गए, तो उन सभी को हमारे तरफ से बहुत-बहुत बधाई। As I watched the video, your highlights of the Goa trip, and also as I look at each of you, it actually reminds me one great principle that I'm learning from you right now. तो मैं जैसे ही आपके जो गोवा की वीडियो मैंने देखा, मैंने एक प्रिंसिपल जो मैंने उससे सीखा। Again, due to pandemic, since 2020, early 2020, whole world are going through a very difficult time right now. 2020 की शुरुआत से हम ये जो कोविड की जो महामारी से जो हम झेल रहे हैं। And somewhat we thought as we starting year 2021, because the sufferings we went through, because the challenges we went through, we thought now pandemic settled down. So 2021 will be just smooth and will be just the life we used to have it before pandemic. तो हमने जैसे आपको 2021 शुरुआत की और तो हमें आपको ये लगा कि अब शायद जीवन थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, कोविड अभी थोड़ा कम हो जाएगा और हमारा जो जीवन आहिस्ता-आहिस्ता करके हम दोबारा वो नॉर्मल सी पे लेके आ पाएंगे। Yes, some other countries throughout the world, they may have a little better and closer to what their life before pandemic due to vaccinations and all that issues. But India, I see we're going through actually maybe harder than year 2020. So I think कोई देश अभी ऐसी भी है जो हमारे जो प्री कोविड समय में थोड़े उस समय के वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन भारत अभी उस सिचुएशन में आया है जहां पे जो केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। But what I'm learning from you, what you teach me right now is you never stop. एक चीज जो आपको जो आपसे मेरे जो मुझे सीखने का जो एक मिल रहा है लेसन इज आप कभी रुकते नहीं है। I know each of you on this forum tonight, you all have your own challenges for sure, not only due to pandemic, but also your personal lives. There are always
challenges and difficult times. तो आज हमारे साथ ऐसा सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जो आज जुड़े हैं, वो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। खाली कोविड से ही नहीं, शायद पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस से भी आपको गुजर रहे हैं। But and also, those times we're confused and we're losing our convictions and the confidence, but you never done it. आई थिंक उस समय में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस, हमारा जो एक व्यक्तित्व ये है, हम बहुत सारे लोग एक्चुअली भूल जाते हैं, लेकिन वो छूट जाता है। लेकिन आप भारत से वो लोग वो कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार रखें। Even though times like this, you're working so hard and you're walking the path to making life better, seems like you don't get anything or you don't get to anything. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप उस पड़ाव में चलते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि अपने जीवन में जो जो ज़िंदगी है या फिर जीवन में हम लोगों के ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी या लोग की ज़िंदगी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हमें मिलता है कि सक्सेस जो है या फिर हमें हमारा जो सपना है, वो बहुत दूर नज़र आता है। Now, I'm pretty sure some of our top leaders here include Mr. Todd Smith, and here I can see Rama Krishna, and I see Dr. Yoga, and then I see Dr. Shastra, and then let me see here. I also saw Sharma here, and then where are our? Let me see. Yeah, Chandra here, and Kishore, and all these great leaders in India. Even though you don't feel like you're making a progress in the times like this, but keep moving, keep pushing, keep not losing your faith and belief to make a life better. Someday it will come, the day will come, you will see the progress. You will see the result. You will see that your life has changed. You will see you touch, help so many people's life better. That day will come, my friends. सर ने कहा कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत हमारे बड़े-बड़े लीडर्स हैं हमारे, तो मिस्टर किम साहब कह रहे हैं कि आज ये जो लोग हैं, इतने बड़े लीडर्स हैं, इनको भी शायद ऐसे लगता होगा कि ये आज का समय में समय शायद थम-सा गया है, बहुत सारे मुश्किलें आ रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में, बिज़नेस लाइफ में भी। लेकिन एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें जो करना है, इस चलते रहना है, उसको सामना करना है, इससे बाहर निकलना है और हमें बड़ा काम करना है। जैसे इन्होंने कहा, जैसे लोगों के जीवन में बेहतरी करना या फिर मेक लाइफ बेटर करना, अपना और हमारे लोग जिसको हम टच करते हैं, हम हर एक स्टेप में हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिन हम ये सारी मुश्किलात से बाहर निकले और हम कुछ बड़ा करके दिखाएं। Now, some of you may think, yeah, bro, Mr. Kim, yeah, whatever you said, but my life did not change or hasn't changed since last year. I know that. शायद आप मन में शायद ये सोच रहे हैं, अरे यार मिस्टर किम तो बोलते रहते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से अभी तक तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है। But my friends and my leaders, I have watched not only one or two or 10 leaders or distributors like you or countries. I see many distributors, the member of a Unicity family like you, pretty much the same condition. I see they never give up. They never lose their hope, confidence, belief in the company of Unicity, and their leaders and their systems, and also in themselves. I saw so many of them, they faced the day they were looking for and they work for. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खाली आप ही नहीं हैं, मैं यही समय ऐसी सिचुएशन से गुजरते हुए बहुत सारे लोगों को, खाली आप ही जैसे लीडर नहीं है, खाली भारत से नहीं है, बहुत सारे देशों से, करीबन जैसे उन्होंने बताया नहीं, 60 देशों से, 60 कंट्री से, जैसे ये देखते रहते हैं कि क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मारामारी है, ये पूरे संसार में है
और ये उन्होंने ये सारा सिचुएशन खुद अपने आँख से देखे हैं और वही व्यक्ति, वही लोग, वही लीडर्स वो समय से होप एक भरोसा एक 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 जो विश्वास जो उन्होंने कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर में, कंपनी की यूनिवर्सिटी के ऊपर में, लीडर्स के ऊपर में, अपलाइन के ऊपर में और सिस्टम के ऊपर में बिलीफ और फेथ ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस समय में। Now, I cannot stop to share this particular two markets or countries in Unicity. मैं 2 कंट्रीज़ या 2 मार्केट के बारे में आज आपके साथ फिर दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। Now, the first country I'd like to share with you about Korea. मैं एक 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 देश जिसका मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है कोरिया। Now, I can see Dr. Yoga. Yeah, Mr. Kim, I knew you're going to talk about Korea, right? तो अभी शायद डॉक्टर योगा ये बोल रहे होंगे अरे ये तो मुझे आपको पता है कि ये शायद कोरिया के बारे में बात करेंगे आज। But let me tell you a little bit about Korea, what's happening under pandemic right now. मैं आपके साथ थोड़ा बताना चाहता हूँ कोरिया में इस पेंडेमिक में क्या हो रहा है। Korea is not as bad or as many of the COVID infection happening right now. कोरिया में इतना ज़्यादा कोविड आपकी इन्फेक्शन अभी इतना बड़ा फैला नहीं है। But the government is very tightly control and restrict all the activities of the people. The great example is in Korea right now, we cannot meet more than 5 people for the personal meetings. तो कोरिया में अभी ऐसा सिचुएशन है कि गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल करके रखा है और अभी सिचुएशन आपको ऐसा है कि हम लोग इवन 5 व्यक्ति आपको फेस टू फेस मीटिंग भी करना मुश्किल है। And our industry, multi-level marketing industry, is considered as a personal meeting, private meeting. So we cannot have more than 5 people get it together. तो हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम बोलते हैं कि ये पर्सनल में आपको मीटिंग वाला बिजनेस है, वन ऑन वन वाला बिजनेस है, लेकिन अभी सिचुएशन वहाँ पे ऐसे है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति के साथ हम इकट्ठा बैठ के मीटिंग भी नहीं कर सकते। We have 8 beautiful offices we call DSC, Distributor Service Center, throughout the Korea, but all closed down. हमारे वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त 8 ऑफिसेस हैं जिसको हम बोलते हैं DSC। लेकिन अभी इस मारामारी में वो सारा क्लोज पड़ा हुआ है। But long story short, last month, early April, we held online Korea convention. हम लोगों ने लास्ट मंथ में ऑनलाइन कोरिया कन्वेंशन हेल्ड किया था। More than 250 new members to qualify to be a presidential club members. वाह, करीबन 250 से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल क्लब मेंबर्स थे। My God. I was standing on the stage with Mr. Bobby Kim, who's the executive vice president, and also our sales director in Korean office, and no one out there, only the background of the online, thousand people. I was so tired to clapping hands because of more than 250 people. We have to recognize it. But you know what? I was so happy and excited, and I was jumping around. मैं उस स्टेज में मैं खड़ा था और मिस्टर बॉबी किम जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और कोरिया के जो सेल्स डायरेक्टर, हम लोग स्टेज में खाली 3 व्यक्ति लोग थे और पीछे ऑनलाइन चल रहा था और हज़ारों लोग ऑनलाइन थे और और मैं बहुत खुशी से मतलब मैं उछल रहा था कि क्योंकि मैं थका हुआ था क्योंकि 250 से ज़्यादा PCM क्लब मेंबर नए लास्ट मंथ थे। In Cambodia, as you heard that, during the pandemic last year, even the first quarter or first 4 months in 2021, we had 4 brand new presidential diamonds, and 1 out of them became also triple diamond, 2 became a double diamond. अभी ये लास्ट 4 महीने में जो 2021 में कंबोडिया में जो एक बहुत छोटा देश है जो हम कहते हैं उसमें 4 डायमंड बने, 2 ट्रिपल डायमंड, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दैट व्हाट यू सेड? 1 triple diamond, 1 2 ट्रिपल double डायमंड diamonds. और 2 डबल डायमंड। आप सोच सकते हैं कि पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, पेंडेमिक अभी भी चारों तरफ में चल रहा है, लेकिन कंबोडिया जहाँ पे इतनी छोटी देश है, हम कहते हैं कि भारत से भी शायद गरीब देश है, वहाँ पे अभी फर्स्ट क्वार्टर ये लास्ट 4 महीने में 4 डायमंड बने, उसमें से 1 ट्रिपल डायमंड और 2 डबल डायमंड बने। There's only 2 DSC in
the capital city of Phnom Penh, and those two even couldn't function because of the government restrictions. And leaders cannot traveling to other provinces because the travel restrictions, but they still found a way to helping others to reach their goals and their dream and living their dream life, even under the pandemic. तो कंबोडिया का जो कैपिटल सिटी में हमारे 2 डीएससी थे, लेकिन क्योंकि कोई कोविड के को चलते हुए वो भी शट डाउन थे, लेकिन सब कुछ बंद था। लीडर्स लोग एक प्रोविंस से दूसरा प्रोविंस नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेकिन उस समय में भी लीडर्स लोगों ने तरीका ढूंढा और आप सोच सकते हैं कि 4 डायमंड निकाले, एक ट्रिपल डायमंड, 2 डबल डायमंड। वो सिचुएशन में जहाँ पे ऑफिस सारे बंद थे, सब कुछ लॉकडाउन था और प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस भी लीडर्स नहीं जा पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तरीका ढूंढा और वो करके दिखाया। Now I know I'm taking too long because I was so excited to see you for last few months here, but definitely we want to hear from the Mr. Todd Smith. So in the end, what I like to ask you, what I learned from you, and I like to ask the same thing. Let's not stop. Keep moving. Keep working. Even though you don't see the light right now in a dark tunnel, the light will come. And the day will come when you get to the end of a tunnel, what and where you want to be. Do you want to feel, oh, now it's time for me to moving? Or since you're moving so well, so hard, even though that in the dark tunnel, now when the light comes, you can start to running and faster, but others were just starting now. Okay, now I'm starting to walking away. You will be long and far away ahead of us, ahead of most of us. What choice you gonna making it? Let's not stop. Keep moving. Even though you don't see the light, the light will come because I haven't seen that. सर कह रहे हैं कि शायद मैं आज ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं आपको खाली एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमें स्टॉप नहीं होना है, मुश्किलें आते रहेंगे, हमें खाली चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जो हम कहते हैं कि ये जो टनल, जो हमारा जो टनल के आगे में जो लाइट दिखता है, वो आपको भी दिखेगा। जैसे बहुत सारे कंट्री में जो मुश्किलात, जो समय उन लोग गुजर के गए, लेकिन उनको भी वो लाइट दिखाई दी, वैसे ही भारत में भी आप लोग को दिखाई देगा। वो ज़रूरी है और वो दिखाई भी देगा। लेकिन एक ही चीज़ आप लोग करना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। इस समय भी से हम गुजर के आगे विक्टोरियस होके सक्सेसफुली आगे निकलेंगे। Thank you very much. And let's have you hear from Mr. Todd Smith. Thank you so much, sir. Thank you so much. Mr. Todd Smith, welcome to our 7 at 7. इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन। इन लोग ये आप अगर देख भी नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, मिस्टर टॉड। Well, great. Well, thank you so much, Bikash. It was great to hear Christopher Kim, and it's great to be here with all of you. Thank you so much, Mr. Todd. Kishore, our presidential sapphire from Northeast, from Guwahati, will be doing the honors of translating you, Mr. Todd Smith. Kishore, are you there? Yes, Todd. Great to do your translation. Yes. Yeah, it's great to hear your voice. I miss you. Yeah, long time. Yes. Well, let me first of all thank all of you for taking your time here tonight to be part of this really important meeting. There are so many great things going on with this company and such an amazing opportunity for each of you. सबसे पहले मैं आप सबको शुक्रिया बोलता हूँ। आज रात आप इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आए हैं। आज कंपनी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी का, और आप सब लोग इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। You know, COVID has obviously had a devastating impact on much of the world. I'm sure over the last year you heard about the United States, and now we're hearing about India. कोविड ने बहुत कुछ दुनिया भर में हमारे बहुत खराब समय से गुजर रहे हैं। यूएस में भी बहुत खराब समय हुआ है, अभी इंडिया में भी वैसा ही एक सिचुएशन हो रहा है। And my hearts go out to each of you who have lost family members or who have been negatively impacted by this
this virus, this horrible pandemic. मैं सभी के दुख को समझता हूं और मैं उनको सिंपैथी करता हूं। आप सभी के इंडिया में जिन लोगों ने इस खराब समय से गुजरा है। And let me say that here in the United States, the network marketing industry has experienced the greatest growth that it's experienced in 2 decades because of the changes that COVID has placed upon us. मैं ये बोलना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमारे यूएस में 20 सालों में इतना ज्यादा बढ़ा है कि मैं बोल नहीं सकता। और ये सारा कुछ ये सिचुएशन कोविड के चलते जो चेंज हुआ है दुनिया भर में, उसके कारण से वहाँ इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। Companies across the board in the United States are experiencing dramatic growth. बहुत कंपनीज हैं जो यूएस में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। And the reason that they're experiencing this growth, I believe, is largely 3 reasons. 3 कारण हैं कि ये सारे कंपनी यूएस में जो इतना बड़ा ग्रो कर रहे हैं। One is there are more people looking for alternative ways to make money. पहला है, बहुत लोग हैं अभी एक इनकम के सोर्स के लिए खोज कर रहे हैं। The second way is that people are forced to be at home, and as a result of that, they're not going to sporting events and festivals and concerts and doing many of the things that they were busy doing, and now they have time to focus on building a business and making money. दूसरा कारण है, लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, कुछ खेल कूद या कुछ रिक्रिएशन नहीं कर रहे हैं। अभी उनके पास बहुत समय है अपने बारे में सोचना और किसी बिजनेस के बारे में सोचना। And then the third reason is that the method that people are now using to build their business is different than it was before COVID. और तीसरा कारण है, जिस तरह से हम लोग पहले बिजनेस को बिल्ड करते थे, वो अभी चेंज हो चुका है कोविड के बाद। And what most people are doing here in the United States is they're using Zoom to do their presentations and to meet with their prospects. हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर लोग अभी जूम करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए। I spend all day from morning until night on Zooms just like this talking to people. मैं सुबह से रात तक मैं जूम कॉल में बहुत बिजी रहता हूँ, लोगों से बात करते रहता हूँ जूम कॉल में। It's very productive. I'm not traveling, I'm not getting in the car. I'm just spending my time building relationships and giving presentations and talking to people by Zoom. इसको करते मैं बहुत प्रोडक्टिव हो चुका हूँ। मैं ट्रैवल नहीं करता, गाड़ी में नहीं घूमता, लोगों के साथ बात करता हूँ, रिलेशनशिप बनाता हूँ और बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। I have often taught that the number one way of building relationships is face to face. मैंने हमेशा बोला है, सबसे पहला कारण चीज जो आपकी रिलेशनशिप को बिल्ड करने का है, वो आप फेस टू फेस अगर लोगों से मिले तब होता है। The second is by doing video presentations or meeting people by video just like this here tonight. दूसरा है वीडियो कॉल, जिस तरह से आप लोग आज कर रहे हैं, उससे भी आप लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। You see, it's amazing for me that I can be talking to people by Zoom, meeting people face to face just like this. And then when I see them face to face, I might not have seen them for 6 months, but when I see them, I feel like I'm talking to them almost every day. अभी देखिए, जूम कॉल करते करते इतना आश्चर्य होता हूँ कि ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने ही बैठा है, और अगर बहुत दिनों के बाद भी उनको मिलता हूँ 6 महीने के बाद, तो लगता है मैं उनको तो रोज मिलता रहता हूँ। Another great advantage of doing Zooms and meeting people is just the ability that you have to connect with them and have their undivided attention. और एक कारण जूम करने के लिए आपको ये चीज जरूरी है कि उन लोगों का अटेंशन आपको चाहिए, आपके साथ वो उनको फोकस करना चाहिए आपके साथ। If you try to do presentations over the phone, people are busy, they're distracted, they're walking around, they're doing other things. But when you're talking to people on Zoom, just like this, you have their attention. They're not distracted doing other things. जब आप फोन में बात करते हैं
तो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको ध्यान नहीं होता है, पर जब जूम पे रहते हो तो आपको मालूम चलता है कि वो आदमी आपके साथ फोकस में है, वो अटेंशन में है और आपको सुन रहा है। So my encouragement to you is to embrace what COVID has done as it relates to your ability to now build your business differently and be much more effective and efficient. अभी ये कोविड के चक्कर से जो हुआ है अभी सिचुएशन, उसको आप लोग एम्ब्रेस कीजिए और नया तरीका जो जूम का तरीका वो अपनाइए ताकि आपको और रिजल्ट मिले। And if for those of you that are not familiar with Zoom, other than perhaps these company events on the 7th of each month, you can get a free Zoom account as long as your presentations aren't more than 40 minutes. जो लोग जूम के बारे में नहीं जानते, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको जूम फ्री में मिलता है। अगर आपका मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा नहीं होता है तो जूम फ्री में भी मिलता है। And even if you need to go over 40 minutes, you just very simply stop and just say, we need to rejoin here. And then you and your prospect or your distributor partner would just get off of Zoom and 1 minute later get back on, and then you can go another 40 minutes. अगर 40 मिनट से ज्यादा भी आपका मीटिंग होता है तो एक तरीका है कि उसको आप खत्म करके दोबारा रीजॉइन कर सकते हैं 1 मिनट के बाद, और वो अगले 40 मिनट का भी फ्री हो जाता है। And so again, Zoom is a great way for you to connect, build relationships, give presentations, train your people, and build your business. जूम एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको आपको अपनाना है। लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग्स को दे सकते हो, अपने प्रेजेंटेशंस को दे सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो। Now, let me just share with you my story for those of you that don't know. मैं अभी अपना कहानी बोलना चाहता हूँ जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम। I have now been with this amazing company for 30 years. मैं इस कंपनी के साथ 30 साल से हूँ। Yeah, it's amazing. That was 30 years ago this month that I joined Unicity. 30 साल पहले इसी महीने में मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। It's very clear that this company is not on trial. ये एकदम साफ है कि ये कंपनी ट्रायल में नहीं है। This company is proven to be a global leader in the network marketing industry. ये कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया है कि ये दुनिया का एक लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। These products are not on trial. These products are proven. Millions and millions of units of these products have been sold and lives are being changed around the world. ये सारे प्रोडक्ट सही है और ये प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर काम कर चुका है दुनिया भर में। Our compensation plan is not on trial. You heard Christopher Kim just talk about what's going on in Korea alone and how many new people have reached the presidential rank just in the last month. हमारे कॉम्पनसेशन प्लान ट्रायल में नहीं है, दुनिया भर में ये काफी सक्सेस चल रहा है। आपने क्रिस्टोफर किम से सुना है कि कोरिया में भी लास्ट मंथ कितने लोगों ने हमारे कॉम्पनसेशन प्लान से प्रेसिडेंशियल रैंक को टच किया है। And and then I look at the India management team. Everybody there are the same people who've been there the whole time I've been traveling to India building a business. Amazing people that care for you, that want you to succeed and will do anything for you. और मैं अभी इंडिया मैनेजमेंट के बारे में सोचता हूँ। ये सब लोग तब से है जब से मैं इंडिया आना शुरू किया हूँ, जब से मैंने इंडिया को बिल्ड किया हूँ। ये सारे लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे। ये बहुत केपेबल लोग हैं और ये यूनिवर्सिटी को बहुत सही तरह से इंडिया में बिल्ड करते हैं। And then the amazing leadership that Christopher Kim read off, the leaders in India that are amazing people that want you to succeed, that are there for you, that are committed to helping you. और जो क्रिस्टोफर किम ने बोला है, इंडिया का जो लीडरशिप है ये सब केपेबल है, वो ये सब लीडर्स आपको सक्सेस बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ है। Everything you need to be successful and to achieve your dreams and goals are in place right now. सब कुछ जो भी चीज आपको चाहिए अपने सपने को बढ़ाने के लिए,
सही करने के लिए, पहुंचने के लिए सारा कुछ जगह में है अभी आपके पास। And if you believe in yourself and you believe you can do it, you've got the right business and the right team to support you on your journey to achieve your goals with Unicity. अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, कंपनी के ऊपर विश्वास है, तो आपके पास आप सही जगह में हो, यहाँ से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। When I got started 30 years ago, I made a major commitment that I was going to do whatever it took to be successful. 30 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने अपने ऊपर एक कमिटमेंट किया था कि मैं सारा कुछ करूंगा जो इस बिजनेस को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करना होगा। I got up early in the morning and stayed up late at night. मैं सुबह जल्दी उठता था और रात को देर से सोता था। My first year with Unicity, I earned 2 crore. मैंने पहले साल में 2 करोड़ कमाया है। My second year, I earned 4.5 crore. और दूसरे साल में मैंने 4.5 करोड़ कमाया है। My third year, I earned 7 crore. तीसरे साल में मैंने 7 करोड़ कमाया है। My fourth year, I earned 9.5 crore. फोर्थ ईयर में मैंने 9.5 करोड़ कमाया है। My fifth year, I earned 11.5 crore. पांचवें साल में मैंने 11.5 करोड़ कमाया है। My sixth year, I earned 13 crore. मैंने 6th ईयर में 13 करोड़ कमाया है। My seventh year, 14 crore. 7वें साल में मैंने 14 करोड़ कमाया है। And now I've earned more than 200 crore in my Unicity career. और आज के तारीख तक मैंने 200 करोड़ से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी से कमाया है। Was it easy? No. ये क्या आसान था? कभी नहीं। I worked hard. मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। I was disciplined. मैं डिसिप्लिन था। I pushed myself every day to do what I knew I should do, including the days that I didn't feel like doing anything. मैंने अपने आप को रोज ठेला हूँ और कभी उस दिन भी ठेला था जिस दिन मेरे को काम करने का दिल नहीं था। And then this great company has been here to support me this entire journey, and they have not let me down. और ये कंपनी ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, मेरे को कभी भी छोड़ा नहीं और मेरे साथ बना रहा। And many of you know that companies come and go in India, but Unicity has never shut down a market. Unicity is committed to the success of the Indian market and committed to each of your success. आप लोग जानते हो बहुत कंपनी आते हैं और चले जाते हैं, पर यूनिवर्सिटी उनमें से नहीं है। यूनिवर्सिटी कमिटेड है आपके सक्सेस के लिए और आपके बिजनेस के लिए। And the great thing about the money that I still earn today with Unicity is it's a passive income. It comes in every day, every month it shows up in my account, and I'm able to enjoy an amazing quality of life. और सबसे बड़ा चीज अभी भी मेरे को पैसा आते रहता है, पैसिव इनकम इस कंपनी से हर एक महीने मेरे अकाउंट में पैसा आता रहता है। ये एक बहुत आश्चर्य चीज होता है हमारे बिजनेस में। And what I want to share here in the remaining time I have with you are 6 important skills that you need to develop. अभी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ 6 स्किल जो आपको इस बिजनेस को करने के लिए डेवलप करना होगा। The first skill that you need to develop is the skill of building meaningful relationships. पहला स्किल है आपका ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना लोगों के साथ जिससे आपको कुछ मिले। Relationships are the glue that hold your business together. हमारे रिलेशनशिप एक ग्लू होता है, एक आठे जैसा होता है जो हमको बांध के रखता है। You see, when your people that you bring into your business and those downline from you, when they get discouraged, when they get down, when they're depressed, if you've got a good relationship with them, they will stay the course. But if you don't have a good relationship with them, they will quit. जिन लोगों को आप लाते हैं, नए लोगों को जिन लोगों को लाते हैं अपने बिजनेस में, जब उनको इस बिजनेस में डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको काम करने का दिल नहीं होता है,
उस समय में अगर आपके उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है तो वो लोग फिर आपके साथ जुड़ने को चेष्टा करते हैं. So you want to do the things that would cause people to like you. आपको ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोग आपको लाइक करें. If I'm doing a Zoom like this with somebody new that I'm presenting the business to, the first thing I want to do is show an interest in that person. जब मैं अपने बिजनेस में आता हूँ, मैं सबसे पहले नए आदमी को उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लेता हूँ. I might say, "How are you doing?" मैं पूछता हूँ आप कैसे हो. And I will show an interest in them and the things that are important to them. What you want to be thinking about when you're giving presentations to people is building a relationship with them, getting them to like you and to want to do business with you. तो आप जब प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको पसंद करना चाहिए और लोगों को ये लगना चाहिए यार मुझे इनके साथ बिजनेस करना है. ये एक माहौल, ये एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है. And as you're building your business with the people on your team, really focus on building relationships with them, working with them, helping them build their businesses. तो ये जब बिजनेस अपना बिल्ड करते हो तो उनको सपोर्ट करना है, रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है और वो एक माहौल बनाना है कि बिजनेस स्ट्रांग, हम इकट्ठा मिलके उस बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं. And then you want to do the things that are going to cause people to respect you. तो आपको ऐसी चीज करने हैं जो जिसकी वजह से लोग आपको रेस्पेक्ट करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Because people who like you and respect you want to do business with you. एक चीज तो ये पक्का है कि आपके साथ वही लोग जुड़ना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं जिसको आप पे रिस्पेक्ट है. ये बहुत So जरूरी my है. challenge to all of you is to be intentional about building relationships with your prospects and with your distributors. तो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप अपना बहुत अच्छा रिलेशंस अपने प्रोस्पेक्ट और अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपने लीडर के साथ जरूर बनाइएगा. The second skill that you want to develop is the skill of inviting people to learn about Unicity. जो दूसरा स्किल है वो है कैसे आप लोगों को यूनिसिटी के बारे में इनवाइट करते हैं, यूनिसिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए. ये है दूसरा स्टेप. And one of the most important skills in building a business is the skill of inviting. तो ये दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द, आपको जो अभी जैसे बताया कि दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो है कैसे आप अपने इस बिजनेस को जानकारी देने के लिए आप लोगों को इनवाइट करते हैं. Your goal is to get the highest percentage of people that you call to agree to meet with you through Zoom to learn about this business. तो आपका एक ही गोल होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग आपके मीटिंग पे आने के लिए तैयार हो. इस जूम के माध्यम से जो आप मीटिंग कर रहे हैं, यही आपका एक गोल होना चाहिए कि कितने ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी मीटिंग पे आए. And of course, if you can meet face to face, that's always best. आप अगर फेस टू फेस आप अगर मिल सकते हैं उनके साथ, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है. When you invite people, when you call somebody and you are going to invite them to learn about our business, the first thing you want to do is you want to create interest and curiosity. तो आप जब भी आप अगर किसी को मिलते हैं या फिर आप ऐसे सेशंस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के ऊपर में क्यूरियोसिटी जनरेट करना बहुत जरूरी है. I'm working with a major international company that is expanding throughout the world and expanding throughout India. तो मैं एक ऐसे बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है और भारत में भी बहुत एग्रेसिवली अभी ग्रो कर रहा है. They're looking for people with your skill set to help them expand their business into India. वो लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके स्किल आपके जैसे हैं और मतलब उन लोगों के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं. Would you be open to learning more about this company and what it can offer you? तो क्या आप ओपन हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सुनने के लिए, जानने के लिए? Now, that is just one example of an invitation
that creates curiosity and interest. मैंने आपके साथ पहले एक ही एग्जांपल दी अभी टू क्रिएट मतलब ये जो जो उत्सुकता जो हम हिंदी में उत्सुकता कहते हैं वो क्रिएट करने के लिए आपके साथ ये एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर की. If you try to tell people about Unicity over the phone, the odds are very high that they will not be interested. तो आप अगर यूनिवर्सिटी के बारे में आप अगर ओवर द फोन आप मतलब आप बोलना चाहते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो क्यूरियोसिटी है या फिर आप उनको जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं शायद वो पूरी तरह से आप उसको समझा ना पाए ओवर द फोन की बात कर रहे हैं. But if you can meet with them face to face or meet with them by Zoom, you then not only can build a relationship with them, but you can give them a presentation where they can learn more about Unicity the right way. तो ये खाली आप अगर फेस टू फेस अगर मिल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है या फिर जूम के माध्यम से आप अगर मिल सकते हैं तो उससे अच्छा क्या होता है कि आप उनके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और जो आप चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन फ्लो आप चाहते हैं वो आप पूरी तरह से उनको दे सकते हैं. In my 30 years of inviting people to learn about Unicity, I have never ever tried to explain the business over the phone. मेरे 30 साल इस यूनिवर्सिटी में जो मैंने बिताए इसमें से 30 साल तक मैं इनवाइट करते रहा हूँ बिजनेस में. ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. 30 साल हो गए उनको लेकिन 30 साल तक मैं बिजनेस को इनवाइट मतलब बिजनेस में इनवाइट कर रहा हूँ लेकिन इस 30 साल में मैं जितने भी लोगों को इनवाइट किया हूँ फोन में कभी इनवाइट हुआ नहीं मेरा. And all of my invitations create interest and curiosity. I never talk about the company, the products, nothing. I create interest and curiosity. मैं कंपनी के बारे में नहीं बताता हूँ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता हूँ मैं कुछ नहीं बताता लेकिन मेरा एक ही चीज रहता है कि मैं क्यूरियोसिटी जो उत्सुकता और इंटरेस्ट वो मैं क्रिएट करने की पूरी कोशिश करता हूँ. And if you're successful at creating interest and curiosity, your prospect is going to ask you questions. तो आप अगर वो क्यूरियोसिटी जो उत्सुकता और जो इंटरेस्ट आप अगर क्रिएट कर पाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड पे तो वो आपको डेफिनेटली आपको सवाल पूछेंगे. They might say, I'm curious, tell me a little bit about this company. तो वो कह सकते हैं यार मैं बहुत उत्सुक हूं क्या आप इस कंपनी के बारे में और थोड़ा कुछ बता सकते हैं. What kind of products do they sell? ये किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं ये Or 100 other questions. या फिर 100 सवाल से ज्यादा वो पूछ सकते हैं आपको. And you know the response I've been saying for 30 years, I'm going to share it with you right now. तो ये 30 साल तक जो मैं रिस्पॉन्स उनको देते आ रहा हूं आपके साथ अभी शेयर करता हूं. I know that you're going to have questions. I did too. But I'm not prepared to answer those questions over the phone. I'd like to meet with you face to face, or I'd like to do a Zoom where I can show you the business, and then I would be happy to answer your questions. तो ये 30 साल तक इन्होंने एक ही चीज की है फोन में इन्होंने एक ही चीज कहा है मुझे पक्का आपको मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा ये 100 सवाल ये सवाल मुझे भी आया था लेकिन अभी इस सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं आपका जो सवाल है मैं आपको पूरा जवाब दे पाऊं. इसका जवाब अगर साथ में मिल सकते हैं या फिर जूम के माध्यम से मैं इस सवाल का पूरी तरह से जस्टिफाइड आंसर आपको दे पाऊंगा लेकिन शायद फोन में मैं आपको पूरी आंसर शायद आपको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा. So not one time in 30 years have I answered people's questions over the phone. 30 साल में मैंने आज तक कोई एक व्यक्ति को ये जवाब नहीं दिया है. My goal is to give them a presentation, and I know that if I tell them too much, they won't agree to meet with me or they won't agree to have a Zoom with me. तो मुझे पता है कि मैंने अगर ज्यादा जानकारी दी अगर फोन में तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोग मेरे साथ प्रेजेंटेशंस में या फिर जूम में या फिर वन ऑन वन में मिलने ना आए. तो वो जो कहाँ पे रोकना है वो हमें पता होना चाहिए. And then you want to get a firm commitment on a time that you're going to meet, whether it be in person or by Zoom. तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको वो समय लेना है उनसे कि कौन से समय में कितना बजे कब कहाँ वो आपके साथ या फिर आप उनके साथ मिल सकते हैं या फिर पर्सनली या फिर जूम के माध्यम से. And if you're going to give your presentation by Zoom, you want to ask them, do they have Zoom downloaded on their smartphone or their computer?
तो अगर आप Zoom के माध्यम से उनके साथ अगर बात करना चाहते हैं, तो आपको एक सवाल होना चाहिए या फिर उनको आप पूछना चाहिए, क्या आपके पास Zoom है या आप Zoom के बारे में जानते हैं? अगर नहीं है, तो क्या आप अपने फ़ोन में या फिर अपने स्मार्टफ़ोन में या लैपटॉप में क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं? And if they're not familiar with Zoom, you want to explain what Zoom is, and then you want to send them a link to download Zoom. तो अगर उनको अगर पता नहीं है, तो जैसे मैंने बताया, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप Zoom के बारे में उनको एक्सप्लेन करें, बताएँ और वो Zoom लिंक उनको भेजें। So the first skill you want to develop is the skill of building relationships. तो सबसे पहला आपको स्किल होना चाहिए वो रिलेशनशिप बिल्ड करने का। The second skill is the skill of inviting people correctly to learn about Unicity. ये दूसरा जो स्किल है वो आप कैसे आप लोगों को करेक्टली इनवाइट करते हैं यूनिसिटी के बारे में जानकारी देने के लिए। And inviting people, you first create curiosity and interest. You control yourself from answering questions, and you get a firm commitment on a time that you're going to meet. तो आप कैसे इनवाइट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप पूरा चीज़ आप उनको आप ओवर द फ़ोन में नहीं बताना है, कौन-सा चीज़ आपको बताना है, कौन-सा चीज़ नहीं बताना है, वो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी मीटिंग से पहले। The third skill you want to develop is presenting the Unicity business. तो तीसरा स्किल है, वो है कैसे आप यूनिसिटी बिज़नेस को आप लोगों को प्रेज़ेंट करते हैं। And if you don't already have a presentation, you want to reach out to your upline and get a copy of a PowerPoint presentation that you can use for your Zoom presentations, or you can print out and use for your face-to-face in-person presentations. तो आपके पास अगर ये प्रेज़ेंटेशन नहीं है, तो आप अपने अपलाइन के साथ टच करके या फिर आप जाके मिल के उनके साथ ये प्रेज़ेंटेशन डाउनलोड करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। And then you want to script out what you're going to say with each slide or each page that you turn so that you are clear and concise with what you're saying. तो आप हर एक स्लाइड में आपको पता होना चाहिए, आप लिखना चाहिए कि मुझे इस स्लाइड में मुझे क्या बोलना है, सो दैट आप क्लियर हैं और कंसाइज़ है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इधर-उधर, आपको क्लियर, कंसाइज़, क्रिस्प वे से आपको एक्सप्लेन करना है स्लाइड वाइज़। Just like me today, I'm being clear and concise. जैसे मैं आज बहुत क्लियर हूँ और बहुत कंसाइज़ हूँ, अब उस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। You want to be effective in giving your presentations really within about 30 minutes, ideally 30 minutes. You don't want to be giving long presentations. तो हम आइडियल सिचुएशन में आपको अगर यूनिवर्सिटी के बारे में प्रेजेंटेशन अगर आपको देने हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको 30 मिनट लेने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। Now, of course, they'll ask questions and the presentation could get longer, but you want to be prepared to deliver the presentation really within 30 minutes. तो बीच में बहुत सारे लोग आपको शायद सवाल पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी को लेके और उस प्रेजेंटेशन को लेके, लेकिन आपका जो सोच होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे 30 मिनट के अंदर-अंदर मुझे ये प्रेजेंटेशंस खत्म करने हैं। So with each slide, you want to say, what is the most important message that I can communicate with my mouth that relates to this slide? तो मुझे इस स्लाइड में मुझे ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली मुझे क्या बोलना है, वही चीज़ मुझे वो बोलना है मेरे मुँह से। And then as part of giving presentations, you want to learn how to ask good questions. ये प्रेजेंटेशन आप जैसे जाते रहेंगे, आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना है कि कैसे आप अच्छे सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछें उनको। It could be, do you feel like you're going to accomplish your goals in your current line of work? जैसे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि आज अभी इस सिचुएशन में आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में या फिर उस काम में क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? Do you have the desire to have your own business and to take control of your life? तो क्या आपका सपना है कि आपका अपना कोई बिज़नेस हो और आपका अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल हो, मतलब अपने समय के ऊपर कंट्रोल हो? Do you take health products so that you are healthy and sleep well and live well?
तो क्या आप हेल्थ प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसकी मदद से आप मतलब आप हेल्दी हो, आप ढंग से सोए और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो? So again, what you want to do is you want to have a great presentation with good visuals so that you can deliver the message clearly and succinctly of what Unicity can offer them. तो आप जब आप प्रेज़ेंटेशन करते हैं तो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, स्लाइड्स बहुत अच्छे दिखने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए और लोगों तक आपकी मैसेज पहुँचने चाहिए कि यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे है और यूनिवर्सिटी में आप जुड़ेंगे तो क्या बेनिफिट होगा आपको। The fourth skill you want to develop is the skill of how to gain positive decisions. ये चौथा जो स्किल है वो है कैसे आप वो पॉजिटिव डिसीजन को आप निकाल के लेके आ सकते हैं। And the first step in this is to identify your prospects' why. Why would they do something like this? What need or desire do they have in their life that is unfulfilled? तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोस्पेक्ट का व्हाय क्या है? क्यों? उनका ये क्यों जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये बिज़नेस या फिर क्यों ये ऐसा काम करना चाहते हैं? क्या उनके जीवन में ऐसा चीज़ नहीं हुआ है या अचीव नहीं किए जिसकी जिसकी वजह से ये बिज़नेस में वो जुड़ना चाहते हैं? It could be that they're out of work because of COVID. ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो कोविड की वजह से शायद वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। It could be because they're suffering financially because of COVID. या शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली अभी बहुत तंगी में चल रहे हैं कोविड की वजह से। But you want to find out why they would do something like Unicity. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो यूनिसिटी जैसा बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं? ये क्यों उनको जानना या समझना बहुत ज़रूरी है। And when you start your presentation and you're having small talk and you're just seeing how they're doing, a lot of times in that small talk, especially now during COVID, you can identify what's going on in their life and why a business like Unicity could make a lot of sense for them. तो अभी जब आप उनके साथ ज़ूम में वार्तालाप करते रहेंगे, छोटी-छोटी बात होती रहेगी, तो आपको ये जानना, वहाँ से पिक करना बहुत ज़रूरी है कि यूनिसिटी वो क्यों कर रहे हैं और उनका ये व्हाय जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। And if you identify why somebody would have an interest in doing a business like Unicity, then you can tailor your presentation more for them and continue throughout your presentation to show them how they can do this business working from home with their skill set and make money and achieve their dreams and goals. तो अगर ये व्हाय जो उनका जो क्यों कि ये यूनिसिटी जैसा बिज़नेस वो करना चाहते हैं या फिर करेंगे, ये अगर आपको अगर जानकारी अगर हो गई, तो आप जब फर्दर अपना प्रेज़ेंटेशन करेंगे, तो आप उस प्रेज़ेंटेशन को उसी एंगल में, आप उसी भाव में आप लेके जा सकते हैं, जिस भाव में उनका व्हाय, उनका क्यों जुड़ा है। सो दैट वो क्लोजिंग वो उनके हिसाब से क्लोज़ हो कि उनका वो व्हाय जुड़ना चाहिए। And then once you've given your presentation, you want to determine your prospect's interest. तो जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो आपको सबसे पहले आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको उनको देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट लेवल कैसा है। And if they are interested, you need to identify what they need to know to make a decision. तो आपको जैसे आपको प्रोस्पेक्ट का पता चलता है कि अगर इंटरेस्टेड है तो आपको ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि इनको वो जो डिसीजन लेना डिसीजन लेने के लिए और क्या चीज़ की सख्त ज़रूरत है। So, as an example, I might say, Chandra, now that you've had a chance to learn about Unicity, what do you feel that you would need to know, perhaps that I've not already shared with you, that would help you know if this is the right business for you? तो चंद्रा जी, मैंने आज तक मतलब अभी तक जो आपके साथ शेयर की है, आपको कैसा लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं जिसकी बदौलत अगर अगर मैंने कुछ मिस की है, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी अगर जॉइन करना है तो और क्या ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है मैं आपके साथ और शेयर करूँ? And Chandra might say, well, I need to know a little bit more about your company. तो शायद वो चंद्रा जी बोल सकते हैं कि और थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। And I'd say, Chandra, I'm very happy to tell you more about our company. What else do you feel you need to know?
तो मैं दोबारा ये सवाल पूछूंगा कि आपका आपका सवाल सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके इस कंपनी के बारे में और बताना जरूर चाहूंगा, लेकिन उससे पहले और आपको और क्या जानकारी चाहिए इसको क्लोज करने के लिए? And he might say, well, I'm interested in learning more about a couple of the products that you told me about. तो ये फिर और दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे आपके और एक दो प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहिए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और जानकारी चाहता हूँ। And I would say, Chandra, I'm very happy to answer all your questions about the products. What else do you feel you need to know other than learning more about our company and some of the products that are of interest to you? तो मैं फिर दोबारा ये चीज़ करूँगा कि मैं उनको दोबारा पूछूँगा कि मैं आपका ये प्रोडक्ट के बारे में मैं डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा, इसके बारे में आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा। लेकिन चंद्रा जी एक बात बताइए, इसको छोड़ के ये कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में छोड़ के और क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं अगर क्लोज़ करना है तो? And then after you identify everything that that person needs to know, then you want to go back through one at a time and share more information on the points that they said they needed to know. तो ऐसे जैसे मैंने आपके साथ अभी पहला सवाल, दूसरा सवाल जैसे मैंने पूछा, वैसे सवाल आप अगर पूछते जाएँगे तो एक ऐसा समय आएगा जब उनका और कोई सवाल बचेगा नहीं। तब आपको क्या करना है, वो पहला सवाल जो कंपनी का है, वहाँ से आपको शुरू करके एक-एक सवाल का जो जवाब है, आप उनको देना है और उनको क्लियर करना है। And so once I would finish with Chandra telling him more about the company, the products that are of interest, and anything else that he said, I would then say, Chandra, now that I've answered your questions, would you like me to explain to you your next step? तो चंद्रा जी, मैंने आपको आज ने पहले आपने जो भी सवाल पूछा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो चंद्रा जी, क्या मैं आपके साथ एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप अगला स्टेप जो अब आपको आगे क्या करना है, क्या मैं आपको बताऊँ? And then if Chandra said, sure, tell me what my next step would be, then I would explain to him the process of getting started. तो जैसे ही चंद्रा जी अगर मेरे को बोलते हैं क्यों नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं अपना अगला स्टेप कि यूनिवर्सिटी में शुरू करने का जो प्रोसेस है, वो उनको बताऊँगा। And after I explained to him the process, I'd say, Chandra, I'd love to work with you. Would you like to work with me and get started today? तो ये सब काम खत्म होने के बाद मैं चंद्र को पूछना था, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? And if I'm with Chandra, I'm going to reach across the table. I'm going to shake his hand. I'm going to say, Chandra, I'm looking forward to working with you. तो मैं अगर सामने-सामने हूँ, तो मैं खड़ा होके मैं उनके साथ हाथ मिला के आपको कहूँगा कि चंद्रा जी, मुझे आपके साथ काम करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। Or maybe bump knuckles with COVID, right? तो अगर कोविड है, तो हम अगर ऐसे कर सकते हैं। And if it's by Zoom, I would say, Chandra, I'm really looking forward to working with you. I know that you're going to do amazing in this company, and I am excited about the opportunity to help you build a successful business. And I'm really excited to help you make the income back that you lost because of COVID and how it impacted your family's finances. तो मैं अगर ज़ूम में मैं चंदा जी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत-बहुत बधाई हो आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके अगर कोई फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए तो हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम वो सारा चीज़ पूरा करें और वो जिस सिचुएशन में आप जो पहले थे, हम आपको वहीं पे लेके जाएँ। The fifth skill that you want to develop is getting your new distributors started correctly. ये 5वां जो स्टेप है वो है आपके जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको आप कैसे सही शुरुआत करें। Once somebody is ready to get started, you want to get them started within 48 hours. कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ काम करने के लिए अगर तैयार है तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर में उनका काम शुरू होना चाहिए। If you don't get them started in 48 hours, their interest will decline and the odds of you getting them started will be reduced. आपने अगर इस 48 घंटे में उनके साथ काम करना शुरू नहीं किया है तो उनका जो इंटरेस्ट लेवल है और जो ऑड्स हैं वो बढ़ जाएंगे और इनका इंटरेस्ट लेवल घट सकता है। So you want to make sure that you are following the system that is being taught to you by your upline and make sure that you're getting your people started exactly according to the system. एक ही चीज़ है कि आपको सिस्टम के माध्यम से सिस्टम के हिसाब से आपको आगे चलना है और उसी हिसाब से ये जो स्टेप बाय स्टेप है कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इनको आगे
स्टार्टअप कराना है, ये उस माध्यम से शुरू करना है आप लोग को। And once you get them started, then you want to very simply begin to show them what they need to do to start building their business. तो जैसे आपने शुरू किया, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि क्या करना है, आप उनको क्लियरली बताना है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। And the sixth skill you need to develop is the skill of teaching your people how to duplicate the system. ये छठा स्किल जो आपको सिखाना है अपने लोगों को, ये सिस्टम की आप अपने नीचे में वो सिस्टम या फिर वो चीज को आप कैसे डुप्लीकेट करें। Please listen to me very carefully with what I'm going to say. मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। It is impossible to build a successful business if you're not following a system. अगर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉसिबल है कि आपका बिजनेस बढ़ सकता है या फिर And बढ़ेगा। the reason it's impossible is because network marketing is about duplication. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। You can't be doing one thing and everybody in your business be doing something different. क्योंकि इस बिजनेस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं कुछ कर रहा हूं और मेरे नीचे वाले मेरे टीम कुछ और कर रहा है, तो हमारा बिजनेस आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। 100% of the network marketing companies in the United States that are growing right now are growing with very simple, duplicatable systems, and everybody within a team is following the exact same system. आज आपको यूएस में जो जितने भी कंपनी ग्रो कर रही है उसमें एक ही चीज है कि उन लोग अपनी टीम में बड़ा टीम या छोटा टीम, उस टीम में एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं जो ऊपर अपलाइन या फिर जो सिस्टम सिखाता है, डिट्टो वही चीज आगे अपने नीचे वही चीज सिखा रहे हैं। I learned many years ago that the fastest way to achieve any goal is to learn from those who've already achieved the goal you desire. तो बहुत पहले मैंने एक चीज सीखा था कि अगर पाना है तो आपको वही व्यक्ति से सीखना है जिन्होंने बहुत पहले ये चीज पा चुके हैं। I have achieved any goal that any of you desire. मैंने ये सारा चीज मैं पा चुका हूं जो आज आप लोग शायद डिजायर या फिर आप मतलब कोशिश कर रहे होंगे या फिर सपना देख रहे होंगे। And I am telling you with as much confidence as I can tell you that you must follow a duplicatable system where everybody in your organization is doing the exact same thing. तो आपको एक ही चीज करना है कि आपके नीचे में जो सिस्टम जो है वही हिसाब से आपको डुप्लीकेट करना है, ना इधर ना उधर, वही चीज सिंपल हिसाब से आपको वही चीज को डुप्लीकेट करना है आप और आपके नीचे टीम में, as simple as that. And the best way to teach people your system is by your example. तो सबसे इजी वे हम इस सिस्टम को हम कैसे सिखा सकते हैं, आपको खुद को सबसे पहले वो एग्जाम्पल बनना है। The duplication process begins when your prospect answers the phone and you invite them to learn about the business. तो ये जो सिस्टम कहां से शुरू होता है, जब आप जब अपने प्रोस्पेक्ट से आप फोन करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, वहां से वो सिस्टम शुरू होता है। When you invite somebody, you're teaching them how we invite. जब आप अपने लोगों को सिखाते हैं कि हम इनवाइट कैसे कर रहे हैं, तो आप एक एग्जाम्पल बन के आप लोगों को वो चीज आप डुप्लीकेट करने के लिए सिखा रहे हैं, तो वो सही होना बहुत जरूरी है। And if you don't invite them right, you will have taught them the wrong way to invite, and they will never, ever know how to invite correctly because of your example. तो अगर सही हिसाब से सही वे से अगर अपने लोगों को अगर कैसे इनवाइट करना है, जो सबसे पहला स्टेप है वही अगर आपने सही नहीं सिखाया, तो वो लोग भी वही गलती करेंगे और आपका जो एक एंटायर प्रोसेस है जो आप जो चाहते हैं कि लोग आए, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। And when you then present the business to someone, you're teaching them from your example how we present the business.
अब जब आप प्रेजेंट करेंगे बिजनेस के बारे में, तो आप अपने हिसाब से आप प्रेजेंट करेंगे लोगों को कि बिजनेस प्रेजेंटेशन किया आपको कैसे किया जाता है। And when you get someone started, you're teaching them from your example how we get people started. और बिजनेस में हम कैसे शुरुआत करते हैं, आप अगर बता रहे हैं आपके खुद के एग्जाम्पल से, तो आप अपने एग्जाम्पल लोगों को आप दिखा रहे हैं कि आप लोगों को कैसे स्टार्ट करवाते हैं बिजनेस में। So make sure that you're following the system that is being taught to you by your upline, and that you're following it exactly the way the system is designed. तो आप, क्योंकि आप एक खुद एक एग्जाम्पल है और आप यही एग्जाम्पल के हिसाब से आप अपने नीचे जो भी आपकी टीम जुड़ती है, तो ये सिखाना एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बताया, एग्जैक्टली उन्होंने 2 बार बताया, ये बहुत ज़रूरी है कि वही हिसाब से आपको अपने लोगों तक पहुंचाना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के हिसाब से, वही स्टेप के हिसाब से आपको वो चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों तक पहुंचाना है या उनको सिखाना है। And then you want to coach them on how to continue to duplicate that system. और आपको उसके बाद में आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको रेगुलरली उनको कोचिंग करना है कि उस सिस्टम को कैसे डुप्लीकेट ढंग से और किया जाए। So for those of you that are watching tonight that have big dreams and big goals, I want you to know that you are at the right place at the right time. You just need to employ the discipline required to do what you need to build a successful business, and don't quit. आज हमारे साथ जितने लोग जो जुड़े हैं यहाँ पे, जिनका कुछ एक सपना है, एक ही चीज़ है, छोड़ना नहीं है, लगा रहना है। वही एक बहुत बड़ा एक गोल है जिसकी बदौलत आज आप मतलब यहाँ तक पहुँचे और आप आगे भी जाएंगे। You know, I've traveled your great country from north to south and east to west. हम आपके देश भारत में हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सब जगह आपको ट्रैवल कर चुका हूँ। And there's a lot of great people in India that need to enjoy a better life, and Unicity can provide that for them. तो यूनिसिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर जरिया बन सकता है। भारत में इतने सारे लोग हैं जो मैं पर्सनली जानता हूँ या फिर हमने देखे हैं कि जिनको यूनिसिटी का प्रोडक्ट या फिर यूनिसिटी की अपॉर्चुनिटी की सख्त जरूरत है। So not only can you improve your life and live the life of your dreams, but one of the most rewarding things of all is helping others live the life of their dreams. तो ना ही आप अपने इस प्रोसेस में, ना ही आप अपनी ज़िंदगी या फिर अपने जीवन को आप अच्छा कर सकते हैं, बस इसके माध्यम से या फिर इसके दौरान आप बहुत सारे लोगों के भी जीवन में उद्धार या फिर सुधार लेके आ सकते हैं। I want to thank you each tonight for giving me your time and attention. तो मैं आज सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज हमारे साथ जुड़े और इतनी अटेंशन से आपने मुझे सुना। And Kishore, if you're here, and Bikesh, thank you so much for inviting me to be part of this. और किशोर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और हमें आपको इनवाइट करने के लिए धन्यवाद कह रहे हैं सर। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। And I look forward to the day when COVID is over in India and I can come and visit all of you and give you a big hug and celebrate. तो मैं बस उस दिन का इंतजार करूंगा कि ये कोविड खत्म हो जाए और मैं आप लोगों के बीचों बीच में आऊं और गले लगाऊं। Thank you, Bikesh. Back to you. थैंक यू टॉड, थैंक यू सो मच।